Good morning, students. Welcome once again in 10th standard biology. Yesterday we had discussed about the neuron structural unit of the nervous system. Today we will discuss about the central nervous system, in which two components are included. First one is human brain and second is the spinal cord. First we are discussing about the human brain. Human brain is the main coordinating part of the body. ब्रेन इज द कंट्रोलर ऑफ द बॉडी. दैट मीन्स पूरे बॉडी के जितने भी पार्ट्स होते हैं सबको कंट्रोल कौन करता है? ह्यूमन ब्रेन. ह्यूमन ब्रेन इज द मेन कोऑर्डिनेटिंग पार्ट ऑफ द बॉडी. इट्स प्रोटेक्टेड बाय 3 लेयर. फर्स्ट वन इज द आउटर मोस्ट स्कल, हार्डी पार्ट स्कल. सेकेंड इज द मेनिंजेस, मीन्स द लेयर्स, जो उसकी लेयर्स होती हैं. एंड थर्ड वन इज द सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड. एंड इट हैज द 3 पार्ट्स: forebrain, midbrain and hindbrain. Forebrain, midbrain and hindbrain. Let's discuss one by one. Forebrain. Forebrain is the main thinking part of the body. Forebrain is the main thinking part of the body and it's made up of the 3 things: olfactory lobe, cerebrum and diencephalon. First is the olfactory lobe. Olfactory lobe concerned with the sense of smell. Olfactory word आता है स्मेल के लिए. तो olfactory lobe, forebrain को olfactory lobe किस में हेल्प करेगा? sense of smell. Second is the cerebrum. Cerebrum is the longest part of the body. Cerebrum is the largest part of the brain. Cerebrum is the largest part of the brain. It occupies the 4/5 part of the brain and its part is the, let's discuss. Second is the cerebrum, next is the diencephalon. Forebrain का last part है diencephalon. Diencephalon का वर्क है controls thoughts, hunger, sleep, stress and body temperature. Forebrain का एक पार्ट है diencephalon जिसका फंक्शन है किसको कंट्रोल करता है? भूख, प्यास, थर्ड्स, हंगर, स्लीप, स्ट्रेस एंड बॉडी टेम्परेचर को. अब बात करते हैं सेरिब्रम की. सेरिब्रम इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन एंड इट कंसिस्ट ऑफ द 4 लोब: olfactory lobe, frontal lobe, parietal lobe, occipital lobe, temporal lobe. मेन इसके 4 लोब है और इसका मेन फंक्शन है it's associated with the emotions, problem solving, speech, recognition. ये जितने भी पार्ट्स मेन, जितने भी एग्जीक्यूशन, ब्रेन की जितने भी एग्जीक्यूशन फंक्शंस होते हैं सब सेरिब्रम इज कंट्रोल्ड बाय द सेरिब्रम. नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज द मिड ब्रेन. दिस इज द मिड ब्रेन. मिड ब्रेन इज कनेक्ट्स द फोरब्रेन. मिड ब्रेन किसको कनेक्ट करता है? फोरब्रेन को. और इसके 4 लोब होते हैं विच इज द सेंटर फॉर द विजन एंड ऑडिटरी इम्पल्स. जितने भी ऑडिटरी और विजन इम्पल्स जाते हैं वो सब मिड ब्रेन में. नेक्स्ट इट एक्ट्स एज ए मोटर रिले सेंटर. यहाँ पे क्या है? इट्स ऑल्सो कॉल्ड मोटर रिले सेंटर. इट एक्ट्स एज ए मोटर रिले सेंटर. नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज द hindbrain. Hindbrain, there are 3 parts of the hindbrain: pons, medulla, cerebellum, pons and medulla oblongata. Cerebellum, pons and medulla oblongata. First discuss one by one. Cerebellum, most important. Cerebellum is also called the little brain. It helps in maintaining posture and balance of the body. जो body का balance, जो body balance जो help करता है, that is controlled by the cerebellum. Next, bringing about precision in voluntary action. जितने भी हमारे voluntary actions होते हैं, playing, singing, writing, जितने भी these are controlled by the cerebellum. Next is the pons. The function of pons is the connects cerebellum, यानी कि connects, किसको connect करता है? cerebellum and medulla oblongata को. जो pons है ये cerebellum and medulla oblongata को connect करता है. It also helps in the respiration control center. यानी कि cerebellum pons जो कंट्रोल करता है respiration control center को. Next class, medulla oblongata. Medulla oblongata helps in control heartbeat, breathing and involuntary action. जितने भी involuntary actions होते हैं जो हमारी willing पर वर्क नहीं करते, these are controlled by the medulla oblongata.
Next, last most important function of medulla oblongata is it helps in the reflex center for coughing, sneezing, and vomiting. And second part of the central nervous system is the spinal cord. Usually, spinal cord is the main part of the central nervous system. It's the tubular structure which is protected by the vertebral column. तो हमारा vertebral column है इसके अंदर होता है spinal cord. Most important function, there are two functions. First is the conduct sensory information from the peripheral nervous system to the brain. यानी कि जितने भी sensory nerves से जो peripheral nervous system से जितने भी sensory information आएंगे उसको brain तक पहुंचाने का काम करता है कौन? Spinal cord. Second is the last function is it serves as the reflex center. Spinal cord helps in the reflex action. And last function of spinal cord is it conducts motor information from the brain to the effector organs. यानी कि brain से effector organs तक जो message पहुंचाते हैं, this is conducted by the spinal cord. So this was all about the human brain, and you have to draw diagram. And thank you so much.